Good morning, Karan. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay. Good morning. Good morning, everyone. Yes. Let's begin with the session immediately. I'll start sharing the screen. Prasad sir, could you please give me the rights to share my screen? Yes, ma'am. You can. Yes. Okay. So I think this is probably second or third session of project management, or probably the second session, I guess. So we are dealing with the first chapter, that is overview of project management as such. And in the first chapter, we have in the earlier session talked about concepts of project, what is a project management. We also talked about which are the attributes of project, what is the significance of project management, who are the stakeholders, and we have defined what is a project. So in this session, we'll move ahead with talking about project life cycle and what are the project management processes as such. So at this end of this session, or probably we may require one more session actually. It's a important topic. So we may require two sessions. So we'll touch base what is the project life cycle, and we'll also understand what are the different project management processes as such, and how are they mapped with the activities. And you will appreciate that whenever I'm actually talking about any project, you should map it also with the task which you are involved in your organization as such. Or if you're working in some other or you're not working, rather you will concentrate on the project which you are actually dealing with, so that you can map the concepts and understanding. Wherever you find difficulty, you may please raise a question either on the WhatsApp or in the chat box. Okay. At this point of time, I also remind you all to give your attendance in the chat box. The link is provided there. So please see that you are marking your attendance. Hello. Yes. Ma'am, attendance link अभी share नहीं होगी. Sir ने ना बोला है. So Okay. So what is the process? Screenshot लेके जो attendance आएगा वही है. Okay. So as per the new policy, now we are going to have the screenshot of the screen. Okay, screenshots का attendance के लिए उपयोग होने वाला है. तो I think it is your responsibility, students, to name your Profile name. login with a profile name with whatever is prescribed. So see that you are taking care of your attendance, and we are going to take care that it is being recorded. So let's do it, because university, as far as this online sessions are concerned, will ask this, because it is conducted before and after your usual working hours. So it becomes a mandate. So see that you are logged in and you are visible enough. Your ID is visible properly as per the given template. Thanks, Prasad sir, for that information. So moving ahead, I'll rush through the project part, the definition part, because we have already seen it in the earlier session. Just to make you all understand the highlighted points, that is, a project when we talk about is a temporary endeavor. Project जिंदगी भर नहीं चलता. ओके हमारी जो लाइफ है वो जिंदगी है, वो ठीक है, उसका भी एक वी कैन कंसिडर आवरसेल्फ आवर लाइफ एज अ प्रोजेक्ट. ओके तो हमारा भी एक बर्थ हुआ है और हमारा भी डेथ होने वाला है. एवरीबडी इज गोइंग टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ. सृष्टि का नियम ही है वो. तो ये यहाँ पे भी है. कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट ले लो, जैसे आपने सोच लिया कि कोई हार्डवेयर का आपने से कंप्यूटर ले लिया, मशीन ले लिया, लैपटॉप ले लिया, वो भी एक प्रोजेक्ट ही है. उसका भी एक दिन वो एब्सोल्यूट हो जाएगा या खराब हो जाएगा और वो अलग से आपको दूसरा लाना पड़ेगा. लेकिन
please try to understand when we talk about of a project, अगर कोई कंप्यूटर या हार्डवेयर खराब हो जाता है तो उसका एक पीस है वो, लेकिन when we talk about its version कि बाबा हमने 10th जनरेशन का पीसी लिया है, that becomes that project, not आपका एक पीस जो आपने घर पे लेके आए हो, that is not a project, it's a piece of product under a particular project, say 10th जनरेशन। या फिर हम अभी मोबाइल का जनरेशन देख रहे हैं, टेक्नोलॉजीज का जनरेशन देख रहे हैं। नाउ 5G का जो जनरेशन चल रहा है, 5G टेक्नोलॉजी, नाउ दैट इज व्हाट इज अ प्रोजेक्ट। तो जो मोबाइल फोन वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, दे हैव बिकम ऑब्सोलीट बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ऑब्सोलीट का मतलब ये है कि उनके शॉर्टफॉल्स हैं, जो नई हमारी डिमांड्स हैं, आपल्या ज्या नवीन गरजा आहेत त्याला ते कुठेतरी कमी पडतंय। ओके, सो विथ दॅट few limitations that can be used, but you face problems, and hence every time we go for a something new additions with new technological advancements. Okay, so project has existence, it has predefined tasks, it has resources which are to be utilized for their development, maintenance and delivery, and definitely it has cost, it has a budget, it has resources like money, material, and definitely it is going to be a temporary phenomena. It will have a start date, it will have an end date, and importantly it is developed or it is undertaken for a common purpose. A goal is there which is aligned with quality perspective. So here are some of the examples, just you can go through quickly. We have already talked about little bit of it, so I'm not going to go into detail of it. You can take any example, say metro railway project in Pune is also one of the project, right? Okay, so there are multiple projects, even construction of a building or a facility or civil construction is a project. If you're designing a new transportation vehicle, it's a project. If you're actually developing any startup is coming up with an innovative idea, providing a service or providing a product, that is also a project. Okay. So these are some more sample of IT project. So basically when we talk about feature of a project, उसका यहाँ पे temporary existence है. It will have a lifeline, a beginning and a definite end. Okay, तो उसका एक finite lifespan है. It will have a lifespan. The opportunity or market window is usually temporary. Most projects have a limited time frame in which the product, in which to produce the product or a service. The project team as a team seldom outlives the project. Seldom matlab not always outlives the project. Most projects are performed by a team created for the sole purpose of performing the project, that is the common goal. Or the unique result hai project involve doing something that has not done before in the same environment. The project may require some innovation to be completed. So हमने अगर कोई एक नया प्रोजेक्ट लिया है सर्विस प्रोवाइड करने का या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का, तो इसका मतलब है कुछ तो नया कस्टमाइजेशन आया है, कुछ तो नया रिक्वायरमेंट आया है. There is some new demand or requirement from the customer or set of people. It could be a set of people, a person or an organization. When we say customer, please try to understand that when we say customer, it is a end user. और एंड यूजर कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है. जैसे टेक महिंद्रा एक कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, उसका कस्टमर कौन है? एट द एंड वी आर यूजिंग इट, राइट? सो वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल थिंक दैट अरे हाँ मैं कस्टमर हूँ टेक महिंद्रा का, लेकिन हम वी आर नॉट द डायरेक्ट एंड यूजर. उनके डायरेक्ट एंड यूजर कौन है? ऑल दोज कंपनीज जो उनसे अपना सॉफ्टवेयर बना के लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन का, जैसे एयरटेल है या वोडाफोन है. नाउ ये जो एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ, these are the real customers of Tech Mahindra. In past when I was with Tech Mahindra, so I know that they were the customer. The British Telecom customer is one more customer.
right? So Tech Mahindra is a telecommunication giant which is developing telecommunication softwares and software products, and the customer of Tech Mahindra is BT. I'm giving one more example. British Telecom is the direct customer, or probably Aircel, AIRCEL is another telecommunication service provider company which is a customer of BT. समझ में आ रहा है? This becomes the third party for Tech Mahindra. Understand? So when we talk about customer base, it's having its own relevance. That's why I gave this example. Tech Mahindra is a telecommunication company, and prima facie we are the users, whoever are using the telecommunication software. But then in between, when we talk about the direct customer or the direct end user, basically it is the BT as an example, which is another company which is taking the services of Tech Mahindra and providing it to Aircel. Aircel is a third party for Tech Mahindra. Are you following this? Yes, everybody? Yes, ma'am. Okay. Yes, Yeah. ma'am. Why I'm giving this example, you should understand the corporate scenario. नहीं तो फिर कंपनी और कस्टमर का एक ही डेफिनेशन आपको मालूम हो सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट दिया. When you go in the corporate world, there is a different context to whatever examples we are talking about. It has a broader and much higher view of the understanding. Hence, I'm giving these examples. Another feature of project is, yes, it is definitely having a lifespan. It is definitely it is a temporary phenomena. Another feature is that progressive elaboration. A project occurs step by step to define the product or service. In a so-called progressive elaboration, मतलब क्या कि जैसे अभी हम प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, probably we may not have the idea कि आगे जाके वो किस तरह का रूप लेने वाला है. Yes, यूजर ने अपना पूरा रिक्वायरमेंट हमें दे दिया है डेवलपमेंट के वक्त, लेकिन जब हम डेवलप कर रहे रहते हैं तभी जाके हमको उसकी और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलते जाते हैं, and accordingly we actually explore it as we proceed further with the project. इसका मतलब है जैसे हम ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सपोज ये सेशन ले लो, maybe initially you have the idea of what is a project and what is a project management. एक बहुत धुंधला सा आइडिया, जैसे मैंने बोला कि माँ का एग्जाम्पल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी लिया जा सकता है, वो घर का पूरा मैनेज करती है. उतना कंटेक्स्ट में हमको मालूम है कि उसको पूरा होम का, हमारा पूरा किचन का इन्वेंट्री संभालना पड़ता है, हमारी पूरी रिक्वायरमेंट्स ऑन द स्पॉट हमको वो हाथ में देती है. ऑन द स्पॉट अगर कुछ लेके आना है तो उसका पूरा जुगाड़ वो कर लेती है. सीमलेसली वी आर गेटिंग द थिंग्स फ्रॉम हर. उसके लिए प्रोजेक्ट है, राइट? और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको धीरे धीरे समझ में आती है, एंड देन शी गेट एक्वेंटेड विद व्हाट आर आवर इंक्लिनेशंस. हमारी जो आवश्यकता है वो उसको समझ में आती है एज द टाइम पासेस, राइट? So whenever we take an example, here they have taken an example of a chemical processing plant. Okay, the process with the process engineering to define the characteristics of the process and ends with final assembly. Now, as we proceed with the chemical processing plant as an example here, step by step as we move ahead, the project stakeholders and the team members will get acquainted with the requirement more closely. They will understand it more closely and they are familiar with it, okay, much better as they progress. So that is the understanding of progressive elaboration. These are the stakeholders of any project. It could the most important person is definitely the project manager, who actually controls and manages the whole drama, right? But to understand what is a stakeholder, these are the people which are affected positively or negatively by the project activities. They are involved, they are affected parties, that is the stakeholders, right? These are the other people, those who are responsible, the project sponsorer and the project team. Sponsorer मतलब जो उसमें invest कर रहा है अपना पैसा. The project team, that is those who are involved in the development activity.
please remember, when I'm saying development activity, it does not mean always a IT project. Generic word hai ye. Okay, when I say project team, it could be a manufacturing project also. It could be just as simple as making a film. Understand? So even film making is a project. मैं अपना एक गाने का एल्बम बना रही हूँ, that is also a project. Media is a project. So don't restrict your idea with IT project. Although for some example I may use an IT example, it doesn't mean that it is only restricted with IT project. It's a generic understanding. Apart from team and sponsor, there are support staff, customers, users, suppliers, opponents of the project, that is the competitors in the market. Yeah, so these are all the stakeholders. Attributes we have already seen, so I'll skip it. Project scope, basically the feature and function that characterize a product or a service. जो भी हम फीचर उसमें डालना चाहते हैं, जैसे इफ आई अप्रोच माय प्रोजेक्ट डेवलपर कि मुझे फलाना फलाना प्रोजेक्ट डेवलप करके लेना है, वो मुझे पूछेगा कि ओके टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स यू वांट इन इट, आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए उसमें. जब मैं वो अपने रिक्वायरमेंट्स उसको बताऊंगी एज अ नेव यूजर, मुझे प्रोबेबली उसमें से कुछ आता नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो मैं कैसे बताऊंगी? मैं अपनी कठिनाइयां उसको बताऊंगी कि मुझे है ना अपना पेरोल निकालने के वक्त मुझे प्रॉब्लम आ रहा है. आई एम अ क्लर्क एंड आई कैन नॉट, आई एम फाइंडिंग डिफिकल्टीज इन जनरेटिंग अ स्लिप, पेरोल की स्लिप बना रही है. या फिर कोई और प्रोजेक्ट ले लो कि आई एम अ फिल्म मेकिंग, आई एम अ एडिटर. ओके, फिल्म में एडिटिंग का काम, और मेरा प्रोजेक्ट है कि मुझे जो भी स्क्रिप्ट आता है वो पूरा एनालाइज करके पूरा फिल्टर आउट करके आना चाहिए और सीमलेसली वो फर्दर जो भी काम लेता है ऐसा पूरा डायरेक्शन का एंड मिक्सिंग का उसको जाना चाहिए. तो मेरा रोल डिफाइन होना चाहिए उसमें. अब ये एक डायरेक्टर का प्रोजेक्ट है तो उसका स्कोप क्या है वो वही बता सकता है. तो उससे मैं जब इंटरेक्शन करती हूँ कि मेरा रोल क्या है एज अ एडिटर, और इफ आई एम अ सम एक्टर, देन आई विल आल्सो आस्क द सेम क्वेश्चन टू द डायरेक्टर. What is my role? What is the scope? Then he will explain it with the help of a story, incidences, dialogues, etc. That gives the scope. What is the scope of my product? Okay, or a project also for that matter. Okay, the work that must be done to deliver a product with the specified feature and function is the project scope. So generic meaning of scope is that जो भी आपके requirements आते हैं सामने वो पूरे features में तब्दील किए जाते हैं और उनको अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं. नाउ यू विल मैप दिस अंडरस्टैंडिंग विद द एक्चुअल एसआईपी व्हिच यू आर डूइंग, राइट? सो जब भी हम पूछते हैं मेंटर्स कि अरे तुम्हारा प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, आप ऐसे दिमाग में ऐसे अरे चल रहा है ये क्या पूछ रहे हैं. हमारा मतलब होता है कि आपका फोकस जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है और आप किस तरह से अचीव करना चाहते हो, राइट? One example to quote over here, suppose it's a inventory project. Okay, so when I'm doing or otherwise I'll give some other project related to an MBA project. Say for example marketing of household products in a particular company. तो वो मेरा प्रोजेक्ट है और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि हाउसहोल्ड प्रोडक्ट है, डाइवर्सिफाइड नहीं है, खाली हाउसहोल्ड प्रोडक्ट है, वो स्कोप है. मतलब प्रोडक्ट का स्कोप हो गया हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, ये डाइवर्सिफाइड नहीं है और स्पेसिफिक ब्रांड का ही है. इसका मतलब है प्रोडक्ट का स्कोप हमको ध्यान में आ गया. प्रोजेक्ट क्या है हमारा, उसको मार्केट करना है, लेकिन कहाँ पे? ओनली पुणे एरिया में. पुणे एरिया में कहाँ पे? ओनली कोथरूड या सिंहगढ़ रोड में, या फिर मे बी इंटर डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्कोप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. मुझे उसमें क्या करना है, और मैं स्कोप में बोल सकती हूँ कि मुझे नए टेक्निक का यूज करना है या नहीं करना है. ओके, हमारा बजट कितना है, ये सारा स्कोप में आ जाएगा. ज्योग्राफिकल स्कोप है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रिसोर्सेस है, रिसोर्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स क्या है, और कितना टाइम है मेरे पास, कितने टाइम में मुझे ये करना है, ये सारा स्कोप में डिफाइन होना जरूरी है. Both scopes are described and detailed with specific tools, and project scope management consists to ensure that the project includes all the work required and only the work required to complete the product successfully. That is why we always say that please stick to the scope, don't divert, क्योंकि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला. As I always say, project का time is directly related to the revenue.
that is the cost involved in your product project. तो अगर हमने ज्यादा टाइम ले लिया तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बावजूद भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं कहलाया जाएगा, इट्स अ फेलियर. ऑल्दो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, आपने बोला कि नहीं मेरा पूरा हो गया, लेकिन 2 महीने की जगह आप 3 महीने 4 महीने लगा रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, इट्स नॉट अ क्वालिटी project. Okay, quality is defined with not only the customers requirement are satisfied properly, but as well as in time also, in budget also. ये पूरा quality का perspective है. So a dynamic process that utilizes the appropriate resources of the organization in controlled and structured manner to achieve some clearly defined objective identified as needs is called as a project management. बहुत सारी activities इसके अंदर होती हैं. It is always conducted with a defined set of constraints, that is rules, systematically. क्यों यूज किया जाता है? ये बहुत जरूरी है because you need to see that it doesn't go offline, it doesn't derails, it doesn't fail to achieve its scope, it or the goal. It is in scope, as well as it is following the different guidelines, so that it completes with the quality checks. It is necessary to track or measure the progress we achieve towards a goal we will accomplish. Hence, project management is used. We use it to aid us with maximizing and optimizing our resources to accomplish our goal. अगर हम ये नहीं यूज कर रहे तो क्या हो सकता है? हमको मालूम ही नहीं है कि हमारी जो गाड़ी है किस रूट पे जा रही है, तो obviously will not reach the destination, or if we reach, we are going to use so many अंदाजे से कुछ तो जुगाड़ करके कर रहे हैं, तो obviously it will have a delay. And as I said, time is directly proportional to the cost. इसका मतलब है it will be a costly project. Costly projects are not successful project, even though if they are completed. It will be a wastage of resources, underutilization or overutilization of the resources. Quality perspective may be declined, and obviously the customers are going to not be satisfied. Obviously आपका market share गिर सकता है because आपका reputation affect हो सकता है, बाद में आपको project मिलने में कठिनाइयां आ सकती हैं. So definitely this is so much affecting the whole business. A particular organization may close down if you're not delivering the quality projects, right? आपका reputation के ऊपर आपका market value directly affect होता है. So these are the obvious advantages: better control of financial, physical and human resource, improved customer relations, shorter development time because you are optimally utilizing everything, lower cost, high quality, increased reliability, higher profit margins, improved productivity, better internal coordination, as well as higher worker morale. डेफिनेटली अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो जहाँ पे पूरा सिस्टमैटिकली चल रहा है, आपका मोरल भी हाई रहेगा कि वाओ, आई एम वर्किंग इन सच अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, इतना अच्छा मुझे मोटिवेशन मिल रहा है सभी तरफ से, तो मुझे भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है सभी तरफ से, एंड डेफिनेटली दैट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर. These are some of the incidences that how people are spending, how the world is looking towards project management. So US spends $2.3 trillion on every project every year. The world as a whole spends nearly 10 trillions of dollars to $40.7 trillion gross products on project. Now it is more. These figures are a few years earlier. So now this is also high. More than 16 million people regard project management as their profession. On average, a project manager earns more than $82,000 per year. Now, it differs from project to project. It could be a nuclear project also probably. It could be some project which is having environmental aspect in it. So, it could be a social, it could be a national or an international project. So, accordingly, the value changes. So as a profession, IT manager is in the list of top 10 most in demand IT skills. Professional societies like Project Management Institute have grown tremendously, and it is the authorized body for various guidelines based on which the project management activities, it's having umbrella of activities, that is many systematic step-by-step processes are given. So the PMI Institute
actually is the board which actually governs the guidelines. They give the guidelines and helps the project manager and the organizations to have some kind of a standardization. So project management research and certification programs continue to grow under the project management profession in this regard. So it's an application of knowledge, skill, tools, techniques to project activities in order to meet project requirements. So कोई भी project हाथ में लिया है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ माँ ने कहाँ पे project management का डिप्लोमा या डिग्री किया है, फिर भी वो जानती है. लेकिन please remember, your mom might have been under the skillful hands of her own mother also or her own mother-in-law. ओके तो उनका स्कूल ऑफ थॉट रहता है वो. ओके वो एक पूरा विद्यापीठ होता है. ओके दैट दीज पीपल आर हैविंग एक्सपीरियंशियल नॉलेज. ओके लेकिन क्या होता है, दो बहनें हैं और दो बहनों की वो जो माँ है उन्होंने एक ही तरह का उनको संस्कार किया है, एक ही तरह का ज्ञान दिया है, शेयर किया है, अपने साथ काम करने के लिए, हाथ बटाने के लिए बोला है. लेकिन एक अपने ही धुन में मशरूफ होती है और एक माँ का सुनती है, पूरा उसका ज्ञान बांट लेती है, शेयर करती है. ऑब्वियसली द स्पैन ऑफ सिस्टमैटिक activities under the person who has been trained under that particular mother will obviously, person A will be much better than person B who is always out of the house, sports में रहती होगी या अपने अलग एक्टिविटीज में बिजी रहती होंगी, तो वो उसको किचन का कुछ नहीं समझेगा या उसको आप बोलते हैं ना लाइफ लेसन्स उससे नहीं मिल सकते. जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स के they are around them, they take the clues of the experiences, which it could be a successful experience or it could be a failure, no matter what the experience is. लेकिन उसमें से lessons बहुत अच्छे मिलते हैं जो किसी किताब में नहीं मिलते. So definitely that is a guideline which I can give as an example. That is the experiential knowledge, and definitely the skills, the tools which are used and the techniques which are used can be understood. Managing a project means taking control and completing it with least pain, expense and casualties so that it is a economically real-time project. There could be mapping of so many other things. You may use general management principles, you may use domain or expert knowledge of that particular subject related knowledge. You may use supporting disciplines क्योंकि बहुत सारे project they have multiple disciplinary other areas which needs to be understood. Okay, and obviously the core project management ideas as well. So it is an art of directing and coordinating human and material resource throughout the life of a project by using modern management techniques to achieve predetermined objective of scope, cost, time, quality and participation satisfaction. So पूरा ये मिला के हम understand कर सकते हैं क्या है project management. It is not limited to one particular area. It has a blend of so many other information and understanding which is making its value significantly high. Just for the sake of, I have already touched base this, but media snapshot, that is just as IT project, we can understand that a production of a movie also is a project. You can visualize that because all of us are seeing movies or a teleserial. So processes involved in making the movies might be, please understand we are now moving ahead with the topic project management processes. तो अगर हम मूवी बनाने का अगर हमने ध्यान में लिया तो समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी मूवी अगर प्रोड्यूस करना है, ओके, पिक्चर बनवायला काहीतरी आयडिया लागते, एक बीज लागतं. बीज म्हणजे सीड, बीज आयडिया. सैराट बनवताना मंजुळ्यांच्या डोक्यात काय सीड असेल, त्यांनी कदाचित त्यांच्या लहानपणीचा एखादा इन्सिडेंट आठवला असेल घरातला किंवा पाहिलेला, मे बी त्याच्यातून त्यांना ती आयडिया आली आहे. So there should be some initiation, some screenwriting which actually takes place. Okay, probably जब हम तारे जमीन पे देखते हैं तो there might be certain autism kids around. Mr. Avadhut Gupte might have seen sorry, not Avadhut Gupte, Amol Gupte, okay, who had done the screenwriting, script writing for that movie Tare Zameen Pe of Amir Khan. So there should be some screenwriting, that is the initiation phase of that particular movie. Okay, then when
the screen or the script writing might have done, it might have further proceeded ahead with casting. Before that, before casting, definitely they might have planned, okay, कि ये मूवी हमको कब प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना उसका बजट रहेगा, what would be the location, accordingly feasibility of the budget and the workability of various tasks आपको उसमें लिखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा. So initiation and planning are the phases, followed by casting. As I said, when the various scripts are ready, the roles are ready, कौन से रोल के लिए कौन सा कैरेक्टर हमको कास्ट करना है, उसका उन्होंने प्रॉबेबली ऑडिशंस लिया होगा, कहाँ से करना है, कैसे करना है, उसका भी एक तरीका रहा होगा उनके पास कि 10,000 में से उन्होंने वो एक्टर सिलेक्ट किए हैं या 100 में से, एंड फ्रॉम विच लोकेशन, इन व्हाट वे, कौन सा टेक्निक उन्होंने यूज किया है, might have been defined earlier and accordingly casted. And then comes the actual implementation. सब जुगाड़ हो गया है, स्क्रिप्ट रेडी है, पूरा प्रोडक्शन टीम रेडी है, पूरा क्रू रेडी है, पूरा कास्टिंग रेडी है, लोकेशन तय हुए हैं. नाउ कम्स द डायरेक्टिंग. एक्चुअली मतलब डायरेक्टर तो पहले से ही इन्वॉल्व रहता है, ही इज द स्पॉन्सरर एज वेल एज द यू कैन से पूरा उसका प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है वो. देयर कम्स द एग्जीक्यूटिंग पार्ट, जैसे एक्चुअल फील्ड पे जाना, शूट करना, एडिटिंग करना, मिक्सिंग करना, फॉली यूज करना, उसको वॉइस ओवर देना, क्लीन प्रोडक्शन करना, फिर उसको फिर एडिटिंग में जाना, फिर उसको. नाउ दिस इज ऑल फॉलोइंग प्रोसेसेस, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेसेस कि किस तरह से मूवी बनती है. देन देयर वुड बी सम प्रूफ रीडिंग्स. प्रूफ रीडिंग्स माने there shouldn't be something which will affect the society in a negative way, should not touch any religious feelings, should not come up as a distress, causing some violence. ये सारा देखना पड़ता होगा, where the release of the movie further is going to be the next step after monitoring and controlling. So releasing of the movie to the theater would be the deliverable project. Deliverable मतलब वो release हो रही है movie, that is the closure of that project. मतलब बिगिनिंग इनिशियल स्क्रिप्ट राइटिंग से शुरू होता है और वो रिलीज होती है मूवी, दैट इज द एंड ऑफ द मूवी. वो मूवी चलती रहती है बाद में, दैट इज अ प्रोडक्ट. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट, जैसे तारे जमीन पे एज अ प्रोजेक्ट, दैट माइट हैव टेकन प्रोबेबली अ ईयर ऑफ टाइम एंड इंटेंसिव सिस्टमैटिक एक्टिविटीज राइट फ्रॉम इनिशिएशन टू द क्लोजर. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द film as a project. So similarly you can understand and map it to any other project for that matter. So many people enjoy watching the extra features on a DVD that describes how these processes lead to the creation. जैसे हमने लगान, I have seen लगान, or probably most of you all have seen it. लेकिन making of the लगान was much more interesting for me than seeing actual लगान. Okay, कि लगान के shooting के वक्त making of लगान जो एक मैंने देखा था, I mean with whatever adverse conditions they have gone through, some funny moments also were captured, but some really struggling moments. इतनी धूप में डेजर्ट में कुछ सीन्स शॉट करते वक्त ये सारे एक्टर्स को कितनी कठिनाई से जाना पड़ा, क्या प्रॉब्लम्स फेस हुए ड्यूरिंग दिस शूटिंग, शूटिंग रद्द करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, डिले करना पड़ा, क्या हुआ सेट पे. So many things are captured in that, and it gives us an idea about how a project is managed actually. So project managers meticulously manages all these details in any field you can consider as an example. सबको ये example understand हो गया है? Everybody has understood this? Yes, friends? Yes, ma'am. Okay. So friends, projects cannot be run in isolation. Project must operate in a broad organizational environment, and project managers needs to use system thinking. मतलब क्या? System thinking मतलब क्या? When we say system, मेरा मतलब है holistic. Okay, taking a holistic view of a project and understanding how it relates to the larger organization. Senior manager must make sure projects continue to support current business needs. Right? So when we take a example of that film also, system thinking यहाँ पे क्या है? मेरा ऑडियंस कौन सा है, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक ये मूवी पहुंचनी चाहिए, इस बेस्ड ऑन विच वी विल गेट द रेवेन्यू, वेदर वो 100 करोड़ के ब्रैकेट के आगे जाने वाली है या नहीं.
in the current scenario. So that is the system thinking, and which why that particular understanding also helps us in planning the promotional strategies also basically. तो वो एक अलग से project होता है, एक smaller project, post production. Okay, pre production, actual production and post production होता है. So it is applicable everywhere. Accordingly, the strategies of development, promoting, or branding are devised. So this is a holistic view I was talking about. Let's not get tensed about seeing this particular diagram. I'm just trying to give you the context of your learning. When we talk about in this yellow area, you can see project management. That is the actual system. जहाँ पे आप कुछ बातें मैनेज कर रहे हो, आपके मैनेजरियल एबिलिटीज वहाँ पे दिखती हैं. The technical abilities are seen. Okay, the context in which this particular project is undertaken is understood, is defined. Okay, so all these abilities are considered when we talk about project management, which are intrinsic to the system. कि मेरे प्रोजेक्ट में अगर फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट है तो डायरेक्टर क्या है, टेक्निकल मेरी टीम कौन सी है, मेरा एजेंडा या थीम क्या है मूवी का, ये सारा मेरे प्रोजेक्ट का इंटरनल कोर हिस्सा है. इसका मुझे पूरा डेफिनेशन करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा बाकी का भी सिस्टम से लेना देना है. ओके, मतलब द एनवायरमेंट ऑल्सो इंटरैक्ट्स. जैसे आई नीड टू डिफाइन दैट प्रोसेसेस, I need to plan that particular processes. I need to schedule the activities which are planned to achieve the processes. I need to define the controlling mechanisms and constraints, rules, protocols, so that my project is monitored and controlled. It doesn't get derailed from all the perspective, money, material, men, schedule, plan, time, etc. Apart from this, there would be back of the mind as a director of that movie, I will have in my mind कि मेरी मूवी बहुत अच्छी होनी चाहिए. जैसे मेरा क्वालिटी चेक पे ध्यान रहेगा, सेंसर बोर्ड मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है या क्या काटछाट कर सकता है मेरे दिमाग में होना चाहिए, अदरवाइज माय एफर्ट्स विल गो फॉर अ वेस्ट. मेरे कस्टमर को, मेरे व्यूअर्स को क्या चाहिए, ये मेरे दिमाग में रहना चाहिए. कौन सा एक्टर अभी यूज करना पड़ेगा मुझे ये प्लान के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, मूवी के लिए, कौन सी जोड़ी हिट रहेगी ये दौरान. Okay, what is their market value? Accordingly, I'll think and do the analysis. अगर कोई नया एक्टर है तो मैं रिस्क तो नहीं ले रही हूँ यहाँ पे मूवी बनाने के लिए, लेकिन ये बहुत ही उसका डेब्यू इतना अच्छा करने वाली हूँ कि इट्स गोइंग टू गेट हिट. दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑल्सो विल हैव अ वेरी सक्सेसफुल डेब्यू. लेकिन मुझे वो रिस्क एनालिसिस